Hello guys. Today we are going to learn a new chapter of VSCG Physics of Unit 5 Thermodynamics Description of a System. Course code is BPHCT 135 of second year. So we are going to learn some basic terminology about thermodynamic systems and classification of boundaries. After that, we learn thermodynamic state of system and thermodynamics variable, like what are intensive and extensive variables, thermodynamic equilibrium, thermodynamic process, like what are the reversible and what are the irreversible processes and quasi-static processes, some representation of a process on an indicator diagram. After that, we got a short summary, then some questions. Okay, so first of all, what is thermodynamic? So the study of the relationship between mechanical and thermal energy constitutes the subject of thermodynamics. Means जब हम एक मैकेनिकल और थर्मल एनर्जी के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो जो सब्जेक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिक्स का होता है. उसकी जो पढ़ाई करते हैं उसको उस रिलेशन की उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. ओके, सो हियर वी आर. नेक्स्ट, after that, as usual, after reading this chapter thermodynamics, we come across some learning outcomes, like what is thermodynamic system with their surroundings and boundaries, thermodynamic variables and how to identify the variables, thermodynamic equilibrium, you can see that. And after that, how do we differentiate between what is reversible and what is irreversible processes, character of quasi-static process. Means क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं. नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम डायग्रामेटिकली कैसे हम डिपिक्ट कर सकते हैं डिफरेंट तरीक़ों से. सो हेयर नेक्स्ट वन इज़ सम बेसिक टर्मिनोलॉजी. सो what now we are able to know what is thermodynamics, but what is thermodynamic system? So here when our focus or attention is on certain quantity of matter or a definite region of thing which is considered to be distinct and separated from everything else that can be influenced it, we refer to as thermodynamic system. Means like where we are going to study some mechanical and thermically system, like a cup of tea. In this example you can know that how we can this is a system of thermodynamics. Okay, so like you can also know by doing this definition, like a certain quantity of matter और अ डेफिनेट रीज़न ऑफ स्पेस जो कि हम कंसीडर किया जाए डिस्टिंक्ट और सेपरेट, हर चीज़ से अलग हो और सेपरेट हो और उसके अंदर मैटर हो या कुछ क्वांटिटी हो और एक डेफिनेट रीज़न में हो, उसे हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं. और ये सिस्टम या तो एक सरफेस के से क्लोज होंगे या ये इमेजिनरी हो सकते हैं, आइदर ये रियल हो सकते हैं. सो ये जो डिफ़ाइन करता है कि देयर इज़ सरफेस रियल और इमेजिनरी, दिस इज़ कॉल्ड बाउंड्री. ओके, और जो बाउंड्री होते हैं वो रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है. ओके, और इसकी शेप चेंज भी हो सकती है और मे नॉट बी चेंज. ओके, एंड आफ्टर दैट दी सिस्टम बाउंड्री we come across surroundings. What is surroundings, guys? So everything else from the system is constitute its surroundings, like for example a cup of tea. So everything else from a cup of tea is known as surrounding. Okay, so you got it. Here we can see an example like an apple. So here apple is a system
and the skin of the apple is boundary, and outside the system all these things from to live as apple is known as surroundings. Here example C, you can see that there is a cylinder. In this a compressed gas is present, and above this a piston is there, so the piston move in or move out. Okay, so the volume can change, but this is a system, and the cylinder is a boundary, and outside the boundary is all constitutes a surrounding. Okay, so any study of thermodynamics begins with the identification of the first system, its boundary or surrounding. Okay, so let's take some specific example. लाइक एक सिस्टम है जो कि सिंपल लाइक अ वेसल हो सकता है, उसके अंदर वाटर हो, या फिर एक ड्राई सेल हो जिसमें कि जिंक और कार्बन के इलेक्ट्रोड्स होते हैं. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम लाइक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. सो अ सिस्टम में बी कम्प्लीटली यूनिफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल कंडीशन. एक सिस्टम जो कि कम्प्लीटली यूनिफॉर्म हो अपने केमिकल कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में और फिज़िकल कंडीशन के रिस्पेक्ट में, उसे तो हम होमोजीनियस कहेंगे. बट जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें लाइक यू नो लाइक वाटर एंड आइस एंड we put it in a beaker, so this one is heterogeneous system. But here like air in a cylinder or a rubber balloon. Okay, so air is a mixture of gases, you know, like nitrogen. In air there is a nitrogen, oxygen, carbon dioxide. So air is a mixture of gases. So if we put it in a cylinder or in a rubber balloon, so this is a uniform mixture of gases, so this one is come under the homogeneous system. And the heterogeneous system like water and ice in a beaker constitute a heterogeneous system. Okay guys, this point is clear. Okay, so here we come across some classification of thermodynamic system. So we are three type of system. First one is closed system. So guys, what is closed system? So closed system हम उन्हें कहेंगे जो कि अपनी एनर्जी को एक्सचेंज तो करें सराउंडिंग साथ, बट जो मास हो उनका वो ना चेंज हो, अनचेंज्ड हो. इन अदर वर्ड्स we can see that no mass can cross the boundary of a closed system, but its volume may change. For example, like the gas in a conducting cylinder fitted with an air tight piston is an example of closed system. Like there is a cylinder in which gas is present with air tight piston, so we can move in or move out the piston. So there is no change of mass, but the energy can change, and some volume also may change. Like there is exchange of energy but not matter. There is only exchange of matter, not matter, only energy. Okay, so mathematically we can write delta E is not equal to 0, delta V that is not equal to 0, and delta M is equal to 0. Here mass is not change. Okay, second one is open system. What is open system? So open system is the system when the mass as well as energy is going to be changed with the surroundings. Okay, so an open system has fixed volume, and this known as control volume. For example, an electrically operated water heater used in bathroom is a familiar example of an open system. Yeah, we can say that geyser is also known as open system, where we can understood by it
gives you hot water and takes cold water by the replacement of hot water. Okay, so here the mass and energy both will change with the surroundings. So mathematically we can say that, here you can see, mathematically energy is not equal to 0 and delta V is equal to 0 and delta M is equal to is not equal to 0. Okay, and also this is the diagram of geyser, water heater. Okay, electrically operated water heater and open system. And third one is isolated system. In this system there is no exchange of energy or mass with the surrounding, is said to be isolated. We can understood by the example of thermoflask. In this there is no exchange of energy, no exchange of matter, okay, and no exchange of heat. So this one is known as isolated system. Like if we put a tea in the thermoflask, then our tea is going to be hot till the 4 to 12 hour or 15 hour, like the quality of the thermoflask. So in this there is no exchange of energy or mass with the surrounding. So this system is known as isolated system. Okay guys, so next one is classification of boundaries. The boundary, if the boundary allows exchange of energy through it between the system and its surrounding, is known as diathermal or thermally conducting. We can say that there is a metallic teapot provides a diathermal boundary to its content. Okay, so अगर एक मेटेलिक टी पोट है तो वो हमें एक डायथर्मल बाउंड्री के का काम कर रही है. जैसे कि अगर ये मेटेलिक है तो इसमें से जो एनर्जी है वो एक्सचेंज होगी, तो सिस्टम से सराउंडिंग में एक्सचेंज हो रही जा रही है. तो इस एक्सचेंज को जो मेटेलिक का जो पोर्ट है, टी पोर्ट है, वो बाउंड्री है मेटेलिक का जो बना है. सो और जो टी है वो उसकी एनर्जी मेटेलिक पोर्ट से बाहर जा रही है, मतलब सराउंडिंग्स में जा रही है, यानी कि एक्सचेंज हो रही है. सो इसे हम डायथर्मल बाउंड्री कहेंगे. ओके, सेकेंड वन इज़ एडियाबैटिक बाउंड्री. सो दिस बाउंड्री वी कैन से दैट in this boundary it doesn't allow any heat to flow across it. Okay, so इस बाउंड्री से थोड़ा भी हीट बाहर मीन्स सराउंडिंग में नहीं जा सकता. देयर इज नो अलाउंस ऑफ एनी हीट टू फ्लो अक्रॉस इट. ओके, और वी कैन से दैट एडियाबैटिक बाउंड्री आइसोलेट दिस सिस्टम थर्मली फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, like wall of ideal thermoflask is adiabatic. Second one is rigid boundary. If a boundary is such that it cannot be moved even with large external mechanical force, it is said to be rigid. जो बाउंड्री मूव नहीं कर सकती चाहे जितना भी एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स लगा लिया जाए, उस बाउंड्री को हम रिजिड बाउंड्री कहेंगे. जो लाइक सिस्टम जो कि कंप्रेस और एक्सपेंड ना हो सके, लाइक शॉर्ट पुट की बॉल, स्पेरिकल बॉल होती है स्टील की, वो थोड़ा भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता ना एक्सपेंड हो सकता है. ये एक क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू रिजिड बाउंड्री का एग्जांपल है. फोर्थ वन इज़ परमिएबल बाउंड्री. दिस बाउंड्री अलो मैटर टू फ्लो थ्रू इट, वी कॉल इट परमिएबल बाउंड्री. ओके, फिफ्थ वन इज़ सेमी परमिएबल बाउंड्री. इस बाउंड्री से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट सिस्टम से पास होते हैं, सिलेक्टिवली पास होते हैं. सो दिस टाइप ऑफ बाउंड्री वी कैन से दैट सेमी परमिएबल बाउंड्री. यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ हॉट क्वार्ट्ज इज़ एन एक्सीलेंट एग्जांपल. ओके, इसमें से ओनली हीलियम पास होता है. और वी कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑफ आरओ that is used for water purification. In this, impurities are used to only flow in semi-permeable membranes like
जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें उससे पास ही नहीं हो पाती, ओनली वाटर पास हो पाता है। परमिएबल जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो उसी में कैच हो जाती है। ओके, so there is some question, cite one example. So these are the four question, so try it with in your notebook and comment on the box that how much you can do by the concept of all. So other thing we can continue in the next class. Okay, thank you guys, thanks for watching and give your support so that I can teach you the all the course of physics. Okay, thank you.